2-4 साल 5 साल तो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी को स्कोर सेटल करते हैं। तो उसका स्टडी है कि 50% इज़ फ्रिवलेस। अगर आप उसमें से 50% निकाल दो तो ऑटोमेटिकली एक तो हमारा सिस्टम फास्ट हो जाएगा। अदरवाइज लिस्ट इज रनिंग इनटू 200-300 केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर। उससे क्या होगा कि अब टाइम तो लगेगा, आप अगर आपने सारे केस टेकअप करने हैं या 200, तो अब उसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है कि एरियर्स जो हैं हमारे पास, उसको चैलेंज है, उसके लिए बहुत सारे वेज एंड मीन्स हम भी डिवाइस करते रहते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, तो अगर आप एनजीडीजी की वेबसाइट पे गए कभी नहीं, तो सारे कॉलेजेस में, लॉ कॉलेज प्रॉब्लम है कि ना तो एनजीडीजी की वेबसाइट के बारे में बताया बच्चों को और ना ही ईएससीआर के बारे में। और ईएससीआर के साथ आपको एक चीज़ और बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरू किया था पहले न्यूट्रल साइटेशन शुरू की है। न्यूट्रल साइटेशन मीन्स कि जो भी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट्स की, उसके लिए एक साइटेशन कोर्ट ने बना दी है अपनी। व्हाट वी वांट टू प्रमोट इज कि व्हाई गो टू ए प्राइवेट पर्सन। आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन, पहले हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एससीआर में प्रिंट होती थी, सिर्फ कोर्ट का अपना रिपोर्टर था। ये प्राइवेट रिपोर्टर सब बाद में चले। जब से सारी कोर्ट्स बनी है, सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर था एससीआर, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, और सारी हाई कोर्ट्स के आईएलआर छपते थे, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स, पंजाब सीरीज, दिल्ली सीरीज, हर एक कोर्ट्स की सीरीज थी। तो दैट वाज द ओनली यू कुड नो ए जजमेंट, जो पता लगती थी। उसके बाद ये सब प्राइवेट प्लेयर आते रहे, तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया इंफॉर्मेशन फास्ट देके, क्योंकि वो जल्दी से छापते थे, इसमें थोड़ा डिले था। बट अब हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं, उसके बाद प्राइवेट के पास जा रही है। ठीक है, तो अगर आप एनजीडीजी की वेबसाइट पे जाएंगे तो एनजीडीजी इज नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। उसके ऊपर सारे हिंदुस्तान में जितने केस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर अवेलेबल है। तो उसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से है कि पेंडेंसी कहाँ कितनी है, सिविल की है, क्रिमिनल की है, ईयर वाइज है, किस स्टेज पे केस पेंडिंग है और किस कारण से डिले हो रहे हैं। तो अगर आप उसको बैठ के आराम से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्टडी करेंगे तो मे बी आप भी हमारे को एज ए लेमैन, क्योंकि आपको बाहर भी काफ़ी इंटरेक्शन है लोगों से, लिटिगेंट से है, मे बी। Thank you, sir. Thank you, sir, for enshrining about the importance that there is no dearth of knowledge and resources. It all needs is humility and passion to pursue it. With this note, can I have a few faculties if they have any questions for the Honorable Justice? Can we have the mic in the first row, please? After cracking a PCSJ exam at state level, a lawyer becomes judges without giving a gestation period at initial level. Due to which there is confrontation in the court of law, although the mission is safe for the lawyer and an advocate, but that confrontation leads to and the matter is not disposed of appropriately as the different district courts. So what is your say on this? Confrontation सर जैसे कि लॉ कंप्लीट करने के बाद PCSJ निकालने का जज बन जाता है, अच्छा ना तो किसी वकील साहब के साथ हो रहे हैं। हाँ, वो ठीक है। यस यस, वो जो आप बता रहे हो, अर्लियर द रूल्स रिक्वायर्ड 2 साल की 3 साल की डिफरेंट स्टेट्स में थी, 2 साल की भी थी, 3 साल की भी। Somehow the Supreme Court at that time felt कि हमारे को टैलेंट नहीं मिल रहा, 2 साल की प्रैक्टिस के बाद अच्छे बच्चे नहीं आते इसमें, तो वो इन प्रैक्टिस होंगे। So that was said कि भी नहीं, आप 0 पीरियड कर दो उसको, इमीडिएटली आफ्टर लॉ देगा। बट अब एक्सपीरियंस ये है कि देयर इज लॉट ऑफ इशू, दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव विद अ लॉयर, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव विद, आप कुछ भी लगाए, आप बच्चे सारे यहाँ पे हैं, आपको रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं बता रही। यू आर ऑल डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप पेरेंट्स को बताएंगे, इमीडिएटली अवेलेबल। ये नहीं है कि मे भी कुछ बच्चे पैम्पर्ड भी होते हैं, एक इशू ये होता है कि दे वांट के भी उनके बच्चे अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, तो उनको
उसके अंदर कोई हर्डल ना हो, दैट इज़ द आइडिया। अगर पेरेंट्स किसी बच्चे को कहीं भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, आपको ये नहीं पता कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपका कोई चालान हो जाए तो मे भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या डेली लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स है। इसलिए वेयर द शू पिंचेस, जो एक नॉर्मल हम कहा, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। कोर्ट में जो भी आदमी आ रहे हैं हमारे पास, वो सारी जगह से दुखी आ रहे हैं, और अगर आप उसके साथ फर्दर मिसबिहेव करोगे कि ये तो गलत है, बट इसके जो सीनियर जिनकी हालत 50-50 साल की है, उस बच्चे की तो एज भी नहीं इतनी होगी, उनके साथ भी मिसबिहेव करते हैं, अपने कुलीग्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, अपने सीनियर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत फेस हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और वही दूसरी, जैसे ब्रदर ने शुरू में बताया था कि इंफॉर्मेशन बहुत है उनके पास, और सारी चीज़ें क्रैमिंग से चल रही हैं। कर दिया, उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया, वो आ गया। उसको एप्लीकेशन का आइडिया इतना नहीं होगा, वो एप्लीकेशन उसने कोर्ट में सीखनी है सारी, कि लॉ को डिफरेंट फैक्ट्स पे कैसे अप्लाई करना है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, लेट अस सी इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। नहीं, ये है, मतलब सोच रहे हैं, सारे इशू है बहुत बड़ा सब जगह। इसमें सब रहा, चार जगह रहा, एक्सपीरियंस यही है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो बाहर के लोगों को, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनमें वो सुलह साफ्ते के लिए बैठे हैं। हाँ, वो है वो कोई 10 बजे से 4 बजे। Thank you for sharing your practical experience, Honorable Sir. Moving on, are there any further queries from the students? I'm sure they are pervaded by the informative session. एक छोटा सा सजेशन मेरा है, जिसको ये वाली जो प्रॉब्लम अभी टीचर ने बताई, और जो प्रॉब्लम जो स्टूडेंट ने पूछा था पेंडेंसी कैसे खत्म करें, तो मैंने एज ए जज कई बार दिया, कई प्लेटफॉर्म्स पे। सिविल जजेस हैं और जो एडीजेस भी हैं, इनको 2 साल के लिए आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस से अटैच करना चाहिए, और रिसर्चर हमें इतनी इनपुट नहीं दे पाता। एंड सेकेंडली उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो तो सिर्फ हमें एक लॉ रिसर्च करके दे सकता है, या फैक्ट्स कहीं पर। लेकिन अगर एक जज है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज है, और अगर कम से कम वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ रहेगा, ये डेलीगेट कर सकते हैं। उसको डिसीजन तो हमने ले लिया, उसको अभी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ये बनाओ, रिजल्ट भी ये है, रीजन भी ये है, आप ये करेंगे। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो वो जज ट्रेन हो जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी जज को, उसको पता चल गया सुप्रीम कोर्ट में कैसे जजेस करती है। और नंबर 2, उधर हमें पेंडेंसी निकालने में, मैं नाम नहीं लूँगा, एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपनी कोर्ट में, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने 10 तो जज बिठा दिए लॉ जुडिशरी के, और 10 टॉप स्टैंडर्ड बिठा दिए। कोर्ट में वो सुन के डिसीजन ले लेते थे, ये मैटर डिसमिस हो गया, ये अलाउ हो गया, रिजल्ट वहाँ लिखवा दिया, और कहा कि स्टेटमेंट बना के आप ले आओ। 80 केसेस रोज के वो निकाल देते थे। मानना है कि ये अगर रिफॉर्म हम करें तो उससे, अब देखिए, एक वो जस्टिस सुदर्शन मिश्रा होते हैं हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में, वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं हाई कोर्ट जज का जो स्टेटस है वो आर्मी के जनरल के बराबर है, बट आर्मी के जनरल के पास जो है उसके अंडर 10 लाख लोग हैं, उसे सिर्फ ऑर्डर देना है, और हाई कोर्ट जज अकेला है, लॉ रिसर्चर है वो, बट स्टिल वो इट इज नॉट ए सपोर्टिंग हैंड, इट इज नॉट द राइट और लेफ्ट हैंड। अकेला उसको सारे काम कर रहे हैं, मतलब उसे गोली भी उसे चलानी है, लोड भी उसको करना है, बंदूक भी उसको भरनी, अकेला वो बैठा है सिर्फ। तो उसके हाथ स्ट्रेंथन करने के लिए अगर हम जजेस को जो है उसके साथ, मतलब 4 लॉ रिसर्चर तो हैं, 4 जजेस भी दे दें उसको, तो हमने जज भी ट्रेन कर दिए, जो नए जज बन गए तो उसमें उसको भी पता चल गया, और प्लस हमारी आउटपुट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। सॉरी, ये मेरा एक माइंड में था, मैंने कहा आपसे। इसमें 2 चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा ट्राई हुआ था पहले, जब नए मजिस्ट्रेट सेलेक्ट हुए ना, या उसमें एक जो प्रॉब्लम देखी वो ये थी, ये जो आप बता रहे हैं ना, जुडिशियल ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट जज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, एडीजे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, किसी सीनियर
तो इस तरह ही जो उनको ये था कि किसी की रिस्पेक्ट करनी है, कुछ करनी है, वो बिल्कुल देखा कि कॉरिडोर में जा रहे हैं तो किसी को विश भी नहीं करेंगे। उसके बाद जब वो नीचे गए, फील्ड में गए, तो दे थॉट कि नहीं, मेरी तो एक्सेस वहाँ तक है, छेड़ सकता है। ये माइंड में उनके एक कठोर सवाल। सो दैट वाज डिसकंटिन्यूड। ये थोड़ा सा हमें चंडीगढ़ नीचे ही जजेस की बहुत शॉर्टेज है, उसके लिए एक्सेस हमें करना पड़ेगा। ये है तो बहुत शॉर्टेज है हमारे पास। टोटल हिंदुस्तान में 17,000 जजेज हैं 40 लाख केस के लिए। इस तरह ब्रदर ने बताया ना, सारा वो आर्मी का जजेज की बात है। जनरल था तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपने कोई डिसीजन लेना होता ना तो आप एक कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, 10 आदमी बैठ के डिसाइड करते हैं। मैंने कहा वही इशू आप कोर्ट में लेके आते हैं तो एक जज बैठ के डिसाइड कर देता। क्यों? वहाँ दे शक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन में दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। सब बिल्कुल शर्किंग है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि मैं अकेला 4 आदमियों को इन्वॉल्व कर लो ताकि कल प्रॉब्लम होगी तो ये हो गए 4-5 आदमी ने किया। हमारे यहाँ सिर्फ जुडिशियल सिस्टम है कि एक, बाकी तो डिफरेंट है रूल्स के हिसाब से, 2 भी सुनते हैं 3। बट ये है कि वहाँ सिंगल आदमी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट वो अपना डिसाइड करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम। हाँ, जुडिशियल देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे डिसीजन लिए हुए फुल कोर्ट के, जहाँ सारे जजेस बैठ के डिसाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में, वो अगर जुडिशियल साइड पे आता है तो उसको भी सेटिस्फाइड कर देते हैं। ये हमारी ब्यूटी है सारे सिस्टम की। तो जुडिशियल साइड पे हमारा एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड डिफरेंट है। ये नहीं हम फिर ईगो रखते कि ये हमने डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी हाई कोर्ट में, तो ये है। तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा नहीं चला। हो सकता है लॉ क्लर्क भी हमारे पास हैं, बहुत सारे बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो इनिशियल स्टेज पे उस एंगल से उनका एक्सपीरियंस लर्निंग नहीं है, उनका एक्सपीरियंस एकेडमिक ज़्यादा है। हमारे वहाँ प्रॉब्लम्स डिफरेंट तरह की, इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। बट आई थिंक प्रॉब्लम्स आती हैं, नई चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उससे सोल्यूशन, जैसे लॉ क्लर्क्स भी कहाँ थे, 10 साल पहले तो थे ही नहीं, प्रोडक्शन है ना, दे आर हेल्पिंग। उससे है कि जज वही है, जैसे ब्रदर ने बताया, एक ही है, अगर उस आप आउटपुट ज़्यादा हो जाए, ये फर्क है। अदरवाइज वो अकेला ही सारे काम कर रहा था। ऐसे ही हाई कोर्ट्स में भी लॉ क्लर्क्स हैं। मे भी कल को अगर ऐसा सिस्टम आएगा तो सब जज को भी लॉ क्लर्क मिल जाएगा। इसकी बात कर रहे थे तो वो केसेस को ही सॉर्ट आउट करने के लिए रखे थे। ऐसे केसेस इन्फ्रक्चर्स आपके हिसाब से हो गए या कौन से कवर्ड हैं या कैटेगराइजेशन, इस तरह इन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। Thank you, sir. With this note, with the approach of problem-solving techniques, are there any further questions from the students? Yes. Teacher never retires. And frankly speaking, you have been at almost 6 places in different varieties. Have seen almost 6 different jurisdictions of law school. Some from national law universities, some from universities like us. How do you rate the two? Rating of national university student who mostly from here, not from our universities, not from orthodox universities. So what you and me have, They are from many places, ऐसी बात नहीं। what come? 20%. लिस्ट, बट हमारे पास जो टेस्ट से भी पास होकर बच्चे आ रहे हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट टेस्ट होल्ड करती है, इन दैट ऑल्सो इज नॉट फ्रॉम लॉ स्कूल्स ओनली, सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बच्चे हैं। वो हमारी यूनिवर्सिटी से होगा। नहीं, सारे हिंदुस्तान से। Then it is a happy mood you are saying. हाँ, ऐसी बात नहीं। But
यूनिवर्सिटी को कैसे रेट करते हैं? We have all infrastructure of the national university. मतलब हम ऐसा My lord, you. तो रेटिंग की कोई पैरामीटर नहीं है। आप ये एक्सपीरियंस की बात है कि मेरे पास तो एक लॉ क्लर्क आ गया पर्टिकुलर एज अच्छा नहीं है, तो somehow somebody will get impression कि वहाँ के शायद ठीक नहीं है सिस्टम। कहीं से कोई बच्चा आ गया बड़ा स्पार्क आ गया तो इम्प्रेशन हो जाएगा कि वहाँ बहुत अच्छा है। तो वो एक आदमी से नहीं होता कुछ, बट somehow ह्यूमन बीइंग है तो वो इम्प्रेशन कई दफ़ा ऐसा जनरेट हो जाता है। अदरवाइज नहीं, वो हमारे टेस्ट में भी बच्चे सारे हिंदुस्तान से, इसीलिए सीजीआई साहब ने इंट्रोड्यूस किया था कि अदरवाइज क्या होगा कि लोकली बच्चे आएंगे ज़्यादा, दिल्ली के होंगे, आसपास के इलाकों के होंगे। टेस्ट रखेंगे तो सारे इंडिया के बच्चे आएंगे तो कम से कम उनको भी एक्सपोजर यहाँ का मिलेगा। That test is not in Hindi. सारी चीज़ें वो आई थिंक इंट्रोड्यूस दैट। My point is that नहीं, वो the ठीक है। hinterland of India is not contributing to that. ये प्रॉब्लम दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें, हमारी जजमेंट सारी ट्रांसलेट हो रही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि वी आर ट्राइंग टू हैव कि भी आप क्रिएटिव पार्ट आपको जो लोकल लैंग्वेज है उसमें मिले, सो दैट समबडी अंडरस्टैंड्स। क्योंकि इंग्लिश में है वो इलिटरेट है, लिटिगेंट या कुछ नहीं आती, उसको नहीं पता क्या लिखा है। वो लॉयर जो बताएगा भाई है, वो केस हार भी गया तो लॉयर कहेगा जीत गया, वो शायद जीत गया नहीं। ये धीरे धीरे हो तो रही है चेंजेस, बट River of knowledge and practical experience live on our stage. Therefore, I request our students to kindly pose their queries. So we have lots of raised hands. Can we have the mic towards them? नमस्ते सर, मेरा नाम निगम मिश्रा है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके कोर्ट रूम में कोई ऐसा केस या कोई ऐसी घटना हुई थी जिसने आपकी सोच को, आपकी स्किल्स को चैलेंज कर दिया और आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया, और अगर ऐसी घटना थी तो वो क्या थी? थैंक यू सर। ऐसे कोर्ट के अंदर ना एक घटना नहीं, वहाँ हर एक केस ही घटना है। आपको लगाया ना, अगर हमारे पास जैसे यहाँ मंडे फ्राइडे को कोई अराउंड 65 केसेज आते हैं, ट्यूसडे को अबाउट के दिन 15-20 आते हैं, और यहाँ का तो ये है कि वो सारे हिंदुस्तान से केस है, ठीक है। एक केस अगर दिल्ली का है, दूसरा मे भी कर्नाटका का होगा, तीसरा आसाम का, तो डिफरेंट है। हाई कोर्ट्स में भी आपके पास 100 केस लगे हैं तो वो 100 डिफरेंट होंगे, फैक्ट्स डिफरेंट होंगे। तो हर एक ही केस में, क्योंकि हमारे को डिसाइड तो उसको करना है, तो हर एक ही केस में वो चैलेंज है उसका। आपको बताऊं कि 4 कोर्ट में रहे, आपको हर एक जगह डिफरेंट मिलते हैं, डिफरेंट तरीके से उसको देखा जाएगा उसमें। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये कहते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो वही लाइनें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसकी इंटरप्रिटेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है। टू ग्रो विद द सोसाइटी होंगे, अगर हम नहीं ग्रो करेंगे तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा सारा सिस्टम। ये शुरू प्रेम हुआ तब भी उन्होंने यही कहा था कि अगर हमने इसको रिजिड कर दिया तो ये फेल हो जाएगा। और इसीलिए आप नेबरिंग कंट्रीज देखो, श्रीलंका में कितनी दफा, हमारा तो, और उसमें बहुत सारा रोल कोर्ट का है। अदरवाइज अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर वाले उस पर जाओगे, सारी जजमेंट्स पढ़ोगे ना, सारा डैमेज हो सकता था। जो थ्रीडिंग जजमेंट्स हैं सारी, केशवानंदन बाबू 4-5 जजमेंट हैं। थैंक यू मैम। More questions? Yes. Please send the mic towards that girl. Good afternoon, Lordship. Lordship, I request you to guide us as a law student. Personally, me, I want to go for a education as my career, but I always get confused that start my career as a litigator or should I go and pursue LLM first? Is it anyway profitable for my career?
And if it is so from where we should pursue it? Like either from India only or from somewhere abroad? LLM? मैं तो आप ही LLM हूँ, तो मेरे को LLM करने मैं आप ये लगाओ कि नहीं है, मेरे से पर्सनली पूछो, नॉट गो इन एकेडमिक्स या और कोई और आपने डिफरेंट तरीके से सोचना, LLM का फायदा हो सकता है। अदरवाइज ऑफ टाइम यू विल सी कि आप हर एक केस में LLM कर रहे हैं। एक केस आपको चैलेंज देगा और आप उसकी रिसर्च करोगे तो वो इंडिविजुअल केस भी पार्टली LLM के बराबर है। और आप देखोगे तो आप इतने सारे थीसिस वहाँ पे लिख दोगे जो PhD में लिखते हैं। सर नहीं, इंडिया और बाहर से तो बाहर से करने का तो एक्सपोजर ही है आपको कि मैं भी वहाँ शायद जाके मैंने नहीं किया, बट कम्युनिकेशन स्किल्स है और है वो, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा क्लासरूम टीचिंग में बिल्ड नहीं करता। एक्सपोजर उनके लॉ में भी शायद वो जो ये आपके वगैरह नहीं वगैरह कम है शायद वहाँ पे भी अब सिस्टम ग्रेजुअली तो एजुकेशन का लॉ में यही शुरू होगा ना। हमारे टाइम में तो क्लासरूम टीचिंग थी, सिर्फ वन वे ट्रैफिक था, कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है चल रहे, और उसमें भी बार लॉ सीरीज हमारे यहाँ होती थी, आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी। लॉ सीरीज होती थी, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर होते थे, तो उसमें से वो पॉसिबल सारे क्वेश्चन आंसर उसमें होते थे, जो भी बनाते थे वो उसी के अंदर हम उसको याद कर लिया। 5 क्वेश्चन करने होते थे, 30% मेरे ख्याल पास मार्क्स से, तो पास हम सब हो जाते थे। दूसरा एज ए सक्सेसफुल लॉयर मैं तो बहुत सारे लॉयर, अब तो ये यूनिवर्सिटीज आप एंटर करो तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी, अभी भी जो डिपार्टमेंट है लॉ के 3 साल वाले, वो यूनिवर्सिटी के एक साइड के कॉर्नर पे होते थे, क्योंकि वहाँ कोई सीरियस स्टूडेंट कभी एडमिशन नहीं लेता, वो सब लीडर्स इन मेकिंग होते थे या ऑलरेडी लीडर होते थे, ठीक है। और एक चीज़ आपने और कही थी, मेरे को याद, तो जहाँ तक कॉलेज का सवाल है, वो मेहनत तो अपनी है सबकी, और लाइटर में मैं आपको बताऊं, नगर से लॉ क्या होती है आप सर्च करो। Inspiring the faculty to endorse outside classroom teaching and have a pedagogy which is assimilated on different practical fields. We have a faculty who has a question for our Honorable Justice. Good evening, Your Lordship. We are really honored to have you here for this interactive session because we do not get this opportunity at all. That is from a constitutional chair. Thank you so much at the outset. Your Lordship, my question is related to my research. My research area is disability law, and my question is related to a law that protects the gender equality. At the same time, it discriminates persons with disabilities. The law is the Prenatal Diagnostic Techniques Act. The law has been established to affirm gender equality. But you don't ask legal questions because these can come in court basically. No, this is the finding of my research. I was questioning this law because the very same law which affirms equality for gender explicitly permits discrimination against people with disabilities. Because according to the Prenatal Diagnostic Techniques Act and the Medical Termination Law, people with disability can be prevented to get born in this world. At the same time, the contemporary universal law and the domestic law is affirming equality for people with disabilities. So, against people with disabilities,
How can we affirm equality for them is my question. Side हो गया. We must have noticed the judgment of the Supreme Court where the lady had gone to the court that she doesn't want to give birth to the child. एक आर्गुमेंट है उसके अंदर कि he also has a right, he or she जो भी डिसाइड होगा कि whether he also has independence. Now, Before I'm not even in he the takes birth. right of the fetus. My question is about वही ना, the वही equality. तो उसके पास राइट्स हैं. No, my question is, Your Lordship, if we are not letting one vulnerable group of people to board, because the law is preventing it, okay, you can freely choose See, for. maybe the reason is I don't. Fine. The reason is that if some disformed or some medically challenged child is born, the responsibility is more. If somebody doesn't take care of his life, तो क्या होगा उसके साथ? Yeah, then the question is about social justice, Your Lordship. हाँ, तो वो सारी चीजें मतलब बट अनबॉर्न चाइल्ड के राइट वो उसमें एक इशू आर्गुमेंट आया था. Thank you, Your Lordship. Due to paucity of time, we request students if they have further queries or any questions to be posed. Yes, we have ma'am there. So can we send the mic towards that side? Thank you. Good afternoon, Your Lordship. I am Vanshika Mishra, student of LLM. Recently, the Indian government has passed a legislation that guarantees women's 33% reservation in the parliament. As we can all see that there are a good number of women lawyers practicing, but at the same time we also see that the representation of women judges in the higher judiciary is itself a question. Sir, kindly enlighten us with this. See, I can't enlighten on that. You must have read a lot of statements of our CJ. He is watching for that and he is taking all possible steps to do that. But if you see the percentage of women lawyers in practice also is not 1/3. Thank you so much, sir. Can we have the student behind the lady who was keen to ask the question? Yes. Thank you. नमस्ते सर. मेरा सर ये सवाल है आपसे कि जैसे मैं जज करके तो हम अपने कॉलेज के साथ कैसे जज की तैयारी कर सकते हैं और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम जज का पेपर क्लियर कर सकते हैं? उसका कोई नुस्खा तो है नहीं. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गाइड करते हैं. सिस्टम जो है ना वो प्रैक्टिकली क्रैमिंग का ही है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट करेक्ट. रीजन के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई रैशनल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को माइंड सेट क्या है उसकी कोई वो नहीं, सिर्फ इंटरव्यू में है थोड़ा बहुत. तो वो आपको गाइड वो करेंगे आपको किस पैटर्न पे, क्योंकि सेम पैटर्न है ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में. इफ यू गो टू तो आपको ये नजर आएगा पास हो गया तो वो दिल्ली में भी पास हो जाता है, वो मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि वो वही पैटर्न लेवल ऑफ प्रिपरेशन उस तरह ही. तो वो गाइडेंस आपको करेंगे. अगर आप लेबर पुट इन करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकलते हैं बच्चे बहुत सारे हमारे पास फर्स्ट में. ऐसी कोई बात नहीं, सब मेहनत की बात है. जनरल नॉलेज साथ में, लॉ तो एक पार्ट है. थैंक यू सर. Ensure that there are no shortcuts to success. So, keeping that in mind, we have due to paucity of time, I can see a lot of hands raised. But if we could have one last question on the forum from the audience, sir, at your discretion. My question is that I will ask you that, please, sir, what is your philosophy in life? We just wanted to hear. What is your philosophy in life? Philosophy of life. You enter this profession, you forget everything.
we go with law only, whatever the cases we have to decide those only. We can't enter our own experience. Experience means to decision making is yes, but not that if I think personally this is right, but legally it may be wrong. That philosophy in judgments may not work there. With honesty, you continue doing. Sir, can we take more questions from you? Can we have the mic in the second row, please? Thank you. Thank you so much for giving me this chance. I'm really keen to ask you a very short query that I have, sir. I'm a political scientist and I'm Dr. Mansasan. I'm teaching in law. So I have been thinking about it. I look at law as a reflection of, as a legal judgment, is a reflection of mass consciousness sometimes, mass consciousness. So have you come across any judgment that you think, because we also read news and all, a lot of times where the sensitive issues would generate a lot of outrage across nations. Do you think the verdict given on those issues have a lot of bearing upon how the mass consciousness has a pressure on it first, like Nirbhaya? Also, to what extent do you think politics has implications for how do you make any judgment for any case? So just to brief, but I'm really curious to know this. Thank you so much. Politics may not have, because our judgment process is based on the Constitution. We draw everything from the Constitution. So we decide in terms of that only. The judges are not affected by any outrage because you see a lot of criticism also comes of many judgments. Because we always welcome fair criticism of our judgment, because a lot of academicians, they come on those. And if you see the earlier commentary Constitution, now the students may or may not be reading the Sarvai, Vasu. These constitutions are quoted in the judgments. They are commentaries only, not the judgments. So that way, politics, they have their own job, they do in the parliament, whatever is there. They frame the law, if somebody challenges, we decide in terms of the Constitution. We have seen the NJC also. But there are many things, not isolated to one. And now, I think one thing I will like to students also, that now these criminal major acts, they are seeking to revise now. Students can also carry out research on that and suggest to them. I think parliamentary committee has been constituted, because these laws will ultimately govern us only. If you can give some suggestions, why not? But maybe with the passage of time, even in the UK, I think laws have changed, but we are continuing with that only. Thank you, sir. Sir, आपसे प्रभावित होते हुए, rather all the with the influence of all the esteemed dignitaries present on the stage, there is a beautiful rendition from our student of first year who's written a poem and has shown eagerness to just narrate it, if the Lordship may permit. I'm Shivansh Maurya, and I'm a proud student of Justice Vedas sir. And I have wrote this poem, and I was titled with Judge and Justice. In a chamber draped with wisdom's gown, a judge renders fair justice to crown. With a gavel sound a solemn decree, balancing scale of truth for all to see. In the beautiful room where virtues reside, the judge, a soldier, in justice abide. Blindfolded justice, scale in hand, an impartial arbiter in legal land. Through statute codes a guided hand, the judge interprets a legal command. A dance of reason where facts unfold. In the pursuit of justice, a story is told. In this theatre of law's grand stage, humanity echoes in each.
The judge a beacon upholding the right, illuminating justice in the darkest night. ये जो फर्स्ट बताया था ना बेटा साहब ने, दिस इज द डिफरेंस ऑफ ए टीचर, नॉट द टैलेंट फ्रॉम एनी, सो दैट देयर पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स, वो शुरू से डे वन से, उसके बाद आप कॉलेज स्कूल कॉलेज. Thank you, Shivansh. Thank you so much, sir, for motivating the student and all of us and inspiring such wonderful legal principles and thoughts amongst us, even the teachers, making them feel that they make a difference in this really vast ocean of knowledge. Thank you so much, sir. Now we would like to request, we've come to the close of our interactive session. It has been an utmost privilege, sir. And as a token of our appreciation, we'd like to request our Chancellor, Galgotias University, Mr. Sunil Galgotia, to please present a memento and a shawl to Mr. Justice Rajesh Bindal, Judge, Supreme Court of India. क्लोजिंग से पहले आपको एक थोड़ा सा लाइटर उसको 7-8 लैंग्वेज आती थी, इसकी बात बताई थी पुराने तो गुम. टाइम तो बहुत है ना यहाँ सबके पास, बैठे थे बात कर रहे थे, तो उसने सबसे पहले उनसे पूछा इंग्लिश में, किसी रास्ते से जाना है तो कहाँ से, इसको इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा इंग्लिश में शायद इनको फ्रेंच आती होगी, फ्रेंच कोई जर्मन 5-6 लैंग्वेज में पूछ लिया, उनको नहीं पता था, नेवर आंसर, चला गया. तो एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा था पर उसको रिसर्च के देखा कितना बड़ा फेलियर है हमारा, इसने हमारे से इसको हेल्प कर देते, उसको 7-8 आती थी, उसका काम चला. On this lighter note, we request Sir to please present the mementos and the shawl to Honorable Mr. Justice Bindal. May I also please request Sir, may I also please request you to present a token of our appreciation to Justice J.R. Mehta, sir. Thank you, sir.
Sir, we are honored and privileged to have such dignitaries with us today for this auspicious and momentous event. Thank you is just a small word, sir, from our side. It is short, which cannot be touched or seen, but it can be felt by all of us today here in this gathering. Thus, on behalf of Galgotias University, we express our request to Professor Dr. Namita Singh Malik, Dean School of Law, to deliver a vote of thanks for our dignity. Thank you. Distinguished dignitaries on the dais, Honorable Justice Rajesh Vidal sir, Honorable Justice J.R. Midha sir, mentor and to School of Law and the guide who has guided so many of our students, Honorable Chancellor sir, respected dignitaries of the dais, Professor Renu Luthra ma'am, Professor S.C. Rena, Aradhna Galgotia, Director of Operations, the faculty, colleagues, students, ladies and gentlemen. Today has been one of the momentous occasions which we had where our students got the opportunity to have an interaction with one of the most respected legal luminaries in India. So, our students, when students come across from various parts of the world, and especially from the country, from the state in our university, they always have a lot of questions in their mind, and the way you have addressed them, not only enlightening them, but also giving them some lightening, ways and the takeaways which they are going to take forward in their life. It reminded me of one of the shloka. It goes like this, sir. Vardate guru sa eva sheshcha parivartet yasya preranaya kasya chitta ritram mitracha sev bhavati sheshto यस्य सहस्या परिवर्तयेत जीवन शैली। अर्थात गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसके ज्ञान से चरित्र बदल जाए, जिसके प्रेरणा से चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। सर, आज आपके ज्ञान से जो आपने बहुत छोटी जो लाइफ लेसन सब स्टूडेंट्स को हमारे दिए हैं, that nothing can beat hard work in this life. This is one thing which we all have been saying to our students quite often. But when it comes from someone like you, sir, it actually makes a different impression altogether. Thank you so much, sir, for sharing these lessons. And yes, how to actually say that there should never be any difference between Kathni and Karni. And also that how important it is for all of us to actually, students to actually learn and study how well it is important to study the Constitution. Many takeaways for the students. Sir, आज हम बहुत धन्यवाद, आपका कोटि धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए और हम सभी को अपना समय देने के लिए. Thank you, sir. Sirs, because of your mentoring, our students are able to have that courage to stand and speak and ask the questions. So this all credit goes to you, sir. Thank you so much, sir. Enormous thanks to our Honorable Chancellor, sir, for always being very supportive and encouraging to us. And he treats all of us as children and always been very encouraging. Thank you so much, sir. Great thanks to Professor Renu Luthra, ma'am. Ma'am is an inspiration. Thank you so much, ma'am, for all the support. Thank you so much, Aradhna Galgotia, madam, Professor S.C. Rena, my faculty colleagues, and all the students. A great thank you again for your active participation and the way you have actually participated in the Socratic way of learning, which will definitely go a long way in shaping your character and in shaping the nation further. Thank you so much, everyone. Jai Hind. Honorable Lordship, with your presence, I'm just reminded of few lines which are a great takeaway from both our Lordships. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. You remind us all effort and attempt in our bit ways. With this, I would request all the students to please stand and give a standing ovation to our both the dignitaries on the dais.
Now we request the gathering to please be rise for the national song Vande Mataram. I request students to please come up on stage. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasha Shamalam Mataram, Vande Mataram. शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयां सुमितद्रुमशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् धन्यवाद जय हिंद Jai Hind. We request all the faculties and student volunteers to join our dignitaries for the high tea in the lawn.